That's a wait for it. He's coming this side or? I'll wait for his Maharaj to come. Welcome to His Holiness Jayapatakas Maharaj. Maharaj, with your permission, I'll continue for a few minutes. So as I was mentioning, Ganga, which originates from Gangotri and flows down Uttarakhand to Uttar Pradesh to Bihar to Jharkhand to West Bengal, meets the river at Ganga Sagar in its 2,500 kilometer journey. And in this journey, as was said earlier, millions of people take bath in this river, and we always feel that taking bath in Ganga river Ganga Maya के साथ पास जाएंगे तो हमारा पाप ही खत्म हो जाएंगे, पुण्य मिल जाएंगे. इसी आस्था से lot of people go to the river and then river used to get polluted. That's why when we started this national mission for clean Ganga, a very gigantic task of cleaning the river Ganga, people thought it may not be possible, it will not be possible, and not in India. But we have karke dikha hai, we have done it very nicely, and a lot of, at least the main stem is extremely good, water standards are very high. It took almost 30-40 years for Europeans to clean the Rhine River and Danube River and Thames River. We have done it in a very short time. We are proud of it. With all the people's participation, with all the people's cooperation, we have done that. And the entire stretch of the mainstem river is now declared clean. It's on bathing water standards. As I said before, the proof of that was the success of Kumbh in 2019, when 21 crore people went to take bath in river. And later on last year in the Kumbh at Haridwar also, millions of people participated. Now we are taking the task of cleaning the tributaries which bring dirty water to the river, because Ganga jitne bhi pavitra ho, if it gets fed by dirty water, it may get dirtier. So we are now in the process of taking up treatment plants for
leaving good water into the river in the tributaries. There are more than 80 tributaries, 60, 70 tributaries for the river Ganga, and the smaller tributaries, those tributaries. So all these rivers are getting cleaned up, and we hope that in a very short time, we would have the entire the ecosystem of the Ganga basin cleaned up. There are a couple of things which we do along with cleaning of river. One is setting up of sewage treatment plants. हम तो पूरे इलाके में आपके उस तरफ भी, इस नदी के उस पार भी नवदीपा में एक बड़ा एसटीपी हमने तैयार करके रखा है. वो एक अगले हफ्ते अगले महीने इसका इनॉग्रेशन भी हो जाएंगे. तो ऐसे तकरीबन एक डेट्स 160 एसटीपीज पूरे गंगा के बेसिन में हम तैयार करके रखा है. इसकी वजह से हम ये सोचते हैं कि गंदा पानी इस नदी में ना आए. साथ ही साथ हम घाट का भी डेवलपमेंट कर रहे हैं ताकि जो लोग पीपल हु वांट्स टू मीट द गंगा जी से जो रिश्ता जोड़ना चाहता है उसी के लिए एक रास्ता बने. एक घाट उसी सिलसिले में हम बन रहे हैं. तो उसके साथ हम एक नया एक प्रोग्राम का भी आयोजित किया है जिसका नाम है अर्थ गंगा. मतलब लोगों को नदी से जोड़ने, अर्थ के ब्रिज से, पुल से जोड़ने का है. इसमें हमने सबसे बड़ा मुद्दा उसमें लिया है कि नेचुरल फार्मिंग. हम ये मान के चलते हैं कि गंगा जी के 10 किलोमीटर दोनों तरफ, 10 किलोमीटर्स ऑन आइदर साइड ऑफ रिवर गंगा, पीपल शुड गो फॉर नेचुरल फार्मिंग. नेचुरल फार्मिंग मतलब केमिकल फर्टिलाइजर ना यूज़ करे, ताकि केमिकल फर्टिलाइजर में क्या होता है कि ऐसे बारिश जब आता है वो फर्टिलाइजर पानी में मिल के गंगा जी में आता है. गंगा जी में जो मछली तैरता है वहाँ पे डॉल्फिन्स है, ओटिस है, बहुत सारे जीव जंतु हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उसको बहुत नुकसान पहुँचता है कि ये केमिकल जो आता है. तो इसलिए अर्थ गंगा का पहला पहलू है कि हम 10 किलोमीटर आइदर साइड ऑफ रिवर शुड बी फ्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर. हम नेचुरल फार्मिंग करें. नेचुरल फार्मिंग कैसे करें? सबसे इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे हमारा गोबर जो दूसरा हमने सोचा कि उसमें ये यहाँ पे मोर टूरिज्म थोड़ा डेवलप हो, क्योंकि आप लोग गंगा जी से जुड़े तो आपको थोड़ा आमदनी हो. कैसे? टूरिज्म की वजह से वहाँ पे गंगा आरती कर सकते हैं. वहाँ के हाट का भी कर रहे हैं. जैसे हाट हम बना रहे हैं उसमें हर महीने हर हफ्ते एक बार हाट बनाएंगे, मतलब मार्केट कर सकते हैं. आपके जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, उसे वो हम बेच सकते हैं और लोग आएगा तो घाट भी डेवलप हो जाएंगे. इसलिए लाइवलीहुड का प्रोग्राम है, स्वेज वाटर उसका ट्रीटेड वाटर वो बेचने का प्रोग्राम है, मोनेटाइजेशन ऑफ वाटर, और साथ ही साथ स्लज को घाटी में बना के नेचुरल फार्मर बनाने की कोशिश कर रहे हैं. तीसरा टूरिज्म डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि हम जहाँ के इंस्टीट्यूशन मिल रहे हैं, जो गंगा जी के पास के शहर है या गांव है या के लोग हैं, सबको अपने पैरों में खड़ा करने के लिए कोशिश करें, मदद करें, ताकि ये लोग गंगा जी को भी पूजा करें और गंगा जी को भी रक्षा करें. और जो हम ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं नमामि गंगे की तरफ से, वो एक साल या 2 साल में वो प्रोग्राम ख़त्म भी हो सकता है. मगर अगर हम लोग तो ये तय करें कि हमारी गंगा को, हमारी माँ को हम साफ रखें, हम सब अपने मन में ये ठान ले कि हम अपने गंगा मैया को साफ रखें, अपने बच्चों को सिखा दे कि हम गंगा नदी में गंदगी ना फेंके, गंदगी किसी को फेंकने ना दें. ऐसा एक ठान करके, विश्वास करके हम चलेंगे तो ज़रूर गंगा जी साफ़ हो जाएंगे. और जैसे मेरे पहले बताया, ये ऊपर से जब शिवजी के सर पे आकाश से, यमुना से, स्वर्ग से भूमि पे आया, तो उस समय गंगा जी ये सोचा नहीं होगा कि मैं भी गंदा हो जाऊंगा. हमारी गंगा थोड़ा बहुत मैली हो गई थी, बट नाउ हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको साफ़ करने के. बहुत कुछ साफ़ हो चुका है, बट उसको कंटिन्यू करने के लिए आप सबकी
भागीदारी चाहिए, जन भागीदारी चाहिए। हम सब मिलके गंगा को साफ रखेंगे कि हमारे जो आगे वाला बच्चों को भी ये गंगा नदी जैसे हमको मिला था पवित्र पुण्य नदी का रूप में हम अपने बच्चों को दे सकें। मैं ये और एक छोटा सा इस घाट के बारे में बताऊंगा। ये मैं सबसे बताता हूँ कि मेरा एक पुण्य की बात है कि इस घाट के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में आए और उसमें भाग करें। ये मैं सोचता हूँ कि ये मेरा भाग्य की बात है, क्योंकि अब 3-4 बार प्रोग्राम शिफ्ट हो गया था, फिर भी ये इस दिन मेरे को यहाँ पे आने का सौभाग्य मिला। मैं प्रभुदेव को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ इस जो यहाँ पे जो बड़ा मंदिर बन रहा है उसी का एक हिस्सा हो जाएंगे ये जो घाट नमामि गंगे सर से मिल रहे हैं। वो 15 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है, कॉस्ट है। ये बन जाएंगे 2 साल के अंदर जब बन जाएंगे एक बहुत सुंदर आपके लिए बहुत सुविधाजनक घाट हो जाए। उसमें वहाँ पे भी प्रोग्राम्स हो सकते हैं, वहाँ पे गंगा आरती भी कर सकते हैं और सबको उससे फ़ायदा मिले, ये सोचकर मैं दोबारा सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं ये सोचता हूँ कि गंगा माँ आप सबको सुखी रखे। और हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा। धन्यवाद। Thank you so very much, Ashok Kumar ji. Director General Ashok Kumar ji, he said that he cannot recite Sanskrit slokas like other Swamis and Prabhujis did. But he is instrumental in building a ghat where millions of people will come here and chant Sanskrit slokas. That goes to his credit. But he has a simple request from all of us who are here today. One simple request. We have to take a sankalpa. All be ready to take a sankalpa? हम सब लोग संकल्प ले सकते हैं? So let us take this sankalpa today and promise him. Ashok Kumar ji, we promise today to keep the Ganga clean. A big Hari Hari Bol. Let us take this promise on behalf of the International Society for Krishna Consciousness. We take this promise, we take this sankalpa today that we will do anything to keep Mother Ganga clean. It's our promise to you today. Okay. Our next speaker. Srila Prabhupada had given him an instruction. He said, I have given you kingdom of God, take it, develop it, and enjoy it. He has taken that instruction to his life. All the development today you see, it cannot be possible without the dedicated sacrifice. Without the dedicated sacrifice of His Holiness Jayapataka Goswami Maharaj Kai. Mayapur is incomplete without His Holiness Jayapataka Goswami Maharaj. He told me a story. He said every Gaudiya Vaishnava Acharya has done something for Mahaprabhu. Like Bhakti Vinod Thakur, he built Yogapith. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, he built Chaitanya Math. And Srila Prabhupada is building this temple of Vedic Planetarium, the largest Vedic temple in the world. And today, he is instrumental. His Holiness Jayapataka Goswami Maharaj is instrumental in getting this Namami Gange project, the largest ghat in 250 years, on the 125th appearance year of Srila Prabhupada. Here, on the Ganges, Prabhupada Ghat. He is instrumental in building this Prabhupada Ghat. So I turn over to Maharaj to speak a few words to inspire all of you to keep that commitment of clean Ganga. Maharaj, His Holiness Jayapataka Goswami Maharaj, hey! Over to you, Maharaj. Om Vishnu Pradaya
Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Navadi Paschatya Deshatarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sanitize. Sri Advaita Gadadara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Nama Krishna Yadavaya Namaha Govala Govinda Ram Srimad Sudana Jai Ganga Mai Ki Jai. Jai Ganga Mai Ki Jai. So, I'd like to welcome His Grace Ashok Kumar from Namami Ganga. So we would like to welcome His Grace Ashok Kumar from Namami Ganga Coming here for this auspicious ceremony of the foundation stone. coming here for the auspicious ceremony of the foundation stone. Our founder Acharya, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami, Our founder Acharya, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami, he said that if he can have a road to the Ganges, if the Ganges is closer, then he can bathe every day and that would increase his life. he told that since the Ganges is closer, if he can build But a, if he, yeah, if he had a road, then he could bathe in the Ganges every day, so his life could get longer. and he wanted to facilitate all the people visit Mayapur And he wanted to facilitate all the people to visit Mayapur, so they can go bathe in the Ganges. so they can go and bathe in the Ganges. Now, right now, 6 million people come to Mayapur every year. Right now, 6 million people come to Mayapur every year. And when the temple of Vedic Planetarium is open, that should increase many times. And when the temple of Vedic Planetarium opens, that should increase many times. Now, I remember that Prabhupada, he would walk by the side of the Ganges. I remember that Srila Prabhupada, he would walk by the side of the Ganges. One day he said, let's take a bath. One day he said, let's take a bath. So he wanted to make the Ganges available to everyone. So he wanted to make the Ganges available to everyone. Now before I had a stroke and was wheelchair bound, I was trained as a life-saver swimmer. So before I had a stroke and before I was a wheelchair bound, I was trained as a lifesaver swimmer. And I saved several people from drowning in the Ganges. And I saved several people from drowning in the Ganges. But there were several foreigners who left their body in the Ganges. There were some foreigners who left their bodies in the Ganges. Having a proper bathing ghat is welcome, as this will save the lives of many people. So having a bathing ghat, it is welcome as it should save lives of many people. And Lord Chaitanya, he was born in Mayapur. And Lord Chaitanya, he was born in Mayapur. He took his appearance here. He took his appearance here. And he would
bathe in the Ganges every day. And he would bathe in the Ganges every day. And also, Ganges is known as Jalavi. Also, Ganges is known as Jalangi. And Jana Muni had an ashram in Mayapur. Also, Ganges is known as Janavi, and Jana Muni has also had his ashram in Mayapur. Because they know that here the Ganges, the Jamuna, and Saraswati are all combined. Also, we know here that Ganges, Yamuna, and Saraswati, they are all combined. मैं थोड़ा हिंदी जानता हूँ लेकिन हिंदी इतना अच्छा नहीं है. मैं थोड़ा थोड़ा हिंदी जानता हूँ लेकिन मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है. I'll speak a little bit in Bengali. So I'll speak a little bit in the Bengali. আমি বাংলায় কিছুটা বলবো. এখন প্রভুপাদ চেয়েছেন যে এই গঙ্গা পবিত্র নদী. এখন প্রভুপাদ চেয়েছেন যে এই গঙ্গা অত্যন্ত পবিত্র নদী. সবাই এসে স্নান করবে, পূজা করবে. সবাই এসে স্নান করবে, পূজা করবে. সুন্দরভাবে পূজা করছে বেনারস আর হরিদ্বার বিভিন্ন জায়গা. সুন্দরভাবে পূজা করছেন বেনারস, হরিদ্বার এবং বিভিন্ন জায়গায়. এখানে আমি কৃতজ্ঞ যে এখানকার ভক্তবৃন্দ দৈনিক পূজা করে. এখানে আমি কৃতজ্ঞ যে এখানকার ভক্তবৃন্দ এই দৈনিক তারা গঙ্গার পূজা করে. এবং সেখানে প্রভুপাদ চেয়েছেন যে সাধারণ লোক যাতে সবাই মায়াপুর এসে স্নান করতে পারে. এবং সেখানে প্রভুপাদ এখানে চেয়েছেন যে সমস্ত লোকেরা যারা মায়াপুরে আসে তারা সকলে এসে মায়াপুর দর্শন করে তারা যেন এখানে এসে গঙ্গায় স্নান করতে পারে. এবং সেই নমামি গঙ্গা অশোক কুমারজি আয়োজনের জন্য এখানে সুন্দর একটা ঘাট এবং একটা রাস্তা নির্মাণ হবে. এবং সেই সুন্দর আয়োজনের জন্য শ্রীযুক্ত অশোক কুমারজি তিনি এখানে খুব নমামি গঙ্গার পক্ষ থেকে তিনি খুব সুন্দর একটা ঘাট এবং খুব সুন্দর একটা রাস্তার ব্যবস্থা করবেন. এই আমার সুদীর আমার ব্রজবিলাস প্রভু বলছেন যে আমরা সবাই চেষ্টা করব যাতে গঙ্গা পবিত্রতা গঙ্গা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবেন. তো আমরা শুনছিলাম ব্রজবিলাস প্রভু উনি ঘোষণা করছিলেন যে আমরা সকলে এই সংকল্প নেব যে আমরা এই গঙ্গার পবিত্রতা গঙ্গা যাতে পরিষ্কার থাকে সেই দিকে আমরা লক্ষ্য রাখব. সুন্দরভাবে বলছেন একটা আগে বক্তা যে সুন্দর যদি স্বাভাবিক গঙ্গা মানে কি বলে গাভী এটা গাভী ডাং গাভী থেকে যদি সাধারণ সার ব্যবহার হয় এটা এটা কোনো কেমিক্যাল জাতি গঙ্গাকে দূষিত করবে না. তো তিনি তাছাড়া অশোক কুমারজি তিনি বলছিলেন খুব সুন্দরভাবে বলছিলেন যে কিভাবে যদি গঙ্গার পাশে যদি গাভী থেকে উৎপন্ন গোবর সার যদি ব্যবহার করা যায় জমিতে এবং জমিতে যদি রাসায়নিক সার যদি ব্যবহার না করা হয় তাহলে গঙ্গার পবিত্রতা গঙ্গার পরিচ্ছন্নতা বজায় থাকবে. এখন অনেক পরিকল্পনা আছে এখানে একটা বার্নিং ঘাট একটা শাসনের এই জায়গায় নাই অন্য জায়গায় একটা পরিকল্পনা আছে. তো এখানে আমাদের অনেক পরিকল্পনা রয়েছে যেমন এখানে একটা বার্নিং ঘাট বা একটা শ্মশান ঘাটের ব্যবস্থা হবে এই জায়গায় নয় কিন্তু অনতি দূরে একটি জায়গাতে একটি শ্মশান ঘাটের ব্যবস্থাও করা হবে.
এখন অনেক কিছু আছে কিন্তু আগে এটা হয়ে যাও তারপরে কাজ। তো এরকম অনেক কিছু আছে কার্যক্রম, কিন্তু আগে এটা হয়ে যাক এবং তারপরে একে একে অন্যান্য কাজগুলি হবে। So please দয়া করে চেষ্টা করুন যাতে গঙ্গা পবিত্রতা রাখা হয়। তো প্লিজ দয়া করে সকলে চেষ্টা করুন যাতে এই গঙ্গার পবিত্রতা রক্ষা হয়। So I'd like to thank Mami Ganga for the very important seva So we would like to thank Namami Ganga for their very important seva to keep the Ganges clean from Gangotri to Ganga Sagar. to keep the Ganges clean from Gangotri to Ganga Sagar. Thank you very much. Thank you very much. Hari Bol. Hari Bol. Thank you so very much, Maharaj. Maharaj made a compassionate remark. He said he was appointed as the lifeguard to save those devotees who swim in Ganges. But he is the lifeguard of the whole community in Shida Mayapur who is saving our lives every day. Give him a big hand. Thank you, Maharaj. He's one of the greatest swimmer. He can swim from one end to the other end. Nobody could beat him. He's unchallenged even till today. Nobody could break his record. Maharaj, thank you for inspiring us. We are now over 5:45. We have to conclude this program. Before concluding this program, there are two speakers. I would like quickly to call upon our communication director, Yudhishthir Prabhu, to speak just a few words, so that he can thank all of you who are assembled here today with great enthusiasm to see this project coming up, and also thank our Ashok Kumarji. Yudhishthir Prabhu. Om Jnana-timirandasya Jnananjana-shalakya Chakshurumritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. So, first of all, I'd like to thank His Holiness Jayapataka Swami Maharaj for inspiring us and for driving the entire initiative on behalf of his International Society for Krishna Consciousness. I would also like to thank Ashok Kumar ji and the entire team of Namami Gange, who have worked tirelessly to bring this project to this stage. I remember when we were in the early days of submitting the project proposal, one of the officials from your department, he told me, generally people have a very bad image about the government of how slow we work. But in this project, we are going to show you what the speed of government can be if we want to make it fast. So the project got sanctioned on 28th of December, and today we are here after a little bit of delays. Otherwise, it would have been much, much faster. So you can imagine at what speed the project is going on, and hopefully with the support of all of you, we would be able to complete it in the span of next 2 years for benefiting not just the community of Mayapur, but all the devotees from around the world who would be assembling here in Mayapur and receiving the blessings of Ganga Mata, Srila Prabhupada and Sri Chaitanya Mahaprabhu. So thank you all very much once again for your support, and thank you, sir. Thank you, Namami Gange, for helping us with this project. Thank you. Thank you, Yudhishthir Prabhu. I just wanted to mention to Yudhishthir Prabhu, when Ashok Kumarji was speaking, there was rain, and Ashok Kumarji mentioned that it is all auspiciousness. That means the God is going to come very soon, and he will be instrumental in building other gods in Shida Mayapur, so that there are many gods facilitated for all the Dhamvasis who are here to take bath in the Ganges. Thank you. So our last speaker today, giving vote of thanks to all of you who had come here to participate in this program, I would like to call upon my good friend, co-director, Subhekshana Prabhu, to come and give the vote of thanks and conclude this program, the Namami Gange project Bhumi Puja.
Hare Krishna. So it's my great pleasure to be here with all of you and express the vote of thanks on behalf of ISKCON Mayapur. So obviously, this wonderful project that we are initiating here today is not a work of one individual or one group of individuals, but this is a multi-team and multinational effort really to make it happen. Of course, there's thousands of individuals which needs to be thanked for their contribution to this project, but we will focus on a couple of those that we had the pleasure and privilege of working and making this project happen. So of course, this wouldn't be possible without the charitable nature of Bali Maharaj. Bali Maharaj, of course, was the one who decided to give a charity to Vamandev, who then pierced the coverings of the universe, and by his grace then Akash Ganga came to this earth. Obviously then Mahadev, Lord Shiva, he somehow or another protected the earth from the impact of Ganga, so we have to thank him as well. Of course, there are many other great personalities that we could mention, but we will just go to more contemporary participants in the projects just to save the time. This is not a Purana class now. So our heartfelt gratitude to Shriji Ashok Kumar for the DG of Namami Ganga project. He's not only a well-wisher of Mayapur, but in a very short time he became a friend of all the leaders here in Mayapur. Very wonderful personality, very inspiring, very dedicated person. We're very happy. It was so nice to hear his words and his dedication and his devotion to Mother Ganga. We would also like to thank the entire Namami Ganga team, especially Mr. Yadav. We would like to thank Shri Bishwajit Bishwas, who is here with us, who is executing this project. We would like to thank Shri GK Mondal and the team who is for putting the project into documenting the project and supervising the project here on the ground. Srimati Nandini Ghosh and the team for helping with different aspects of the project, and Mr. Ashok Bhattacharya as well for assisting in bringing this project to fruition. Of course, in our team here in Mayapur and our ISKCON team, we have special thanks to Mayapur co-directors, His Holiness Japataka Maharaj, His Holiness, His Grace Hriday Chaitanya Prabhu, who unfortunately is not here with us physically. I'm sure he's with great enthusiasm watching it on Mayapur TV. Obviously, Hriday Chaitanya Prabhu, he really worked very hard. He was for months absorbed. He was reminding everybody about their duties and responsibilities, always sending messages and making sure that the project is moving forward. Brajabilas Prabhu, a big thanks, a big inspiration also. As you can see, he's very enthusiastic as a speaker, but when he tries to get the project off the ground and in the management room, he's the same energy, working tirelessly, getting everybody fired up, not afraid to take risk and a decision to make sure that such a wonderful project can take place. We would like to thank Yudhishthir Govinda Prabhu. Really, he's a Mayapur man in Delhi. It would be very difficult for us to do this work without his help and support. Jagadatriyaha Prabhu, in a very short time, and land department team worked very hard to acquire missing pieces of land. Akshay Ramachandra Prabhu from Mayapur, from our legal team, for putting all the documentation and paperwork together. Madhava Gauranga Prabhu, who was involved in the initial aspects of this project and has done lots of work. Devaki Nandan Prabhu, our MEB member, for involving Mr. Jindal and getting us help and support with various aspects. Obviously, Raivata Prabhu, who is sitting right there and who has come up with a very beautiful concept design for this ghat. We would also like to thank Nandan Prabhu. I mean, he's like Hriday Chaitanya Prabhu, always thinking about development, assisting Hriday Chaitanya Prabhu very nicely. He worked very hard
to make sure that this happens. We also wanted to thank our management team who has organized this wonderful event. Prem Chaitanya Prabhu from our Ganga temple, Ashray Govinda Prabhu, Krishna Vijay Prabhu, Prem Chaitanya Prabhu, and of course Krishna Chaitanya Prabhu and the Gurukul team for performing all the pujas and worship. So we are very, very grateful, very, very honored, and very blessed by this wonderful association. There is unlimited glories of Mother Ganga, but one of the glories which wasn't mentioned, but we can see practically today that Ganga attracts a people of very exemplary and saintly character, dedicated, selfless people, and we are so happy to be in such an exalted assembly here today. So thank you very much. We hope to see you again for the opening of the Ghat and then taking a bath once this project is completed. So thank you very much. Hare Krishna. Thank you, Subhekshna Prabhu. As Subhekshna Prabhu said, there are two personalities that are very, very important. I think he forgot to mention Bhagirath, who brought the Ganges here today. And also Hriday Chaitanya Prabhu, who was instrumental in bringing this Ghat here in Sridham Mayapur. Let us all give them a big hand. Now to show gratitude, Kritajnata, gratitude, on behalf of the International Society for Krishna Consciousness, our founder Acharya, His Divine Grace, A.C. Bhakti Vedanta Swami, Srila Prabhupada Ghat. We wanted to offer mementos to Sri Ashok Kumar ji and Sri Biswas ji from EPIL, and His Holiness Jayapataka Goswami Maharaj would hand over this memento to Sri Ashok Kumar ji for this historic, heroic effort in building this Ghat in Sridham Mayapur, and also Bhakti Vinod Swami Maharaj would present the mementos to EPIL Biswas ji, and this is a Narsingadev book. Because of Narsinga Chaturdashi is coming very soon, we are presenting him the Narsingadev book, the Last Temples Narsingadev book, to Sri Ashok Kumar J.K. And then you can give the bag also to Ashok Kumar ji. Bhakti Vinod Maharaj would give to Mr. Biswas from EPIL, Executive Director EPIL Sri Bishwadit Biswas ji, and Srimati Lipika Biswas, she is also here. Please give them a big hand. So the next part of the program, Mr. Ashok Kumar ji was telling me, we have built many, many ghats. And all those ghats are not being maintained. So we have introduced a program so that there is every day there is Aarti in this Ganga Ghat. And now we are going to perform that Aarti. I have to inform Mr. Ashok Kumar ji that in Mayapur there is only Aarti. We only do Aarti every time, so he doesn't have to worry. So now our next program is Aarti. We will do Aarti. After that we have Yajna, and we will conclude with the Yajna, and after that there is Prasadam for all of you. I thank all of you for coming here and participating in this program. I wanted all of you to sit here and watch the Aarti. Please don't come there. Sit here and watch the Aarti. Thank you all very much. Hare Krishna. হরে কৃষ্ণ তাড়াতাড়ি প্রদীপ ধরিয়ে দিন হরে কৃষ্ণ যারা আরতি করবেন তাড়াতাড়ি চলে আসুন হরে কৃষ্ণ তাড়াতাড়ি
সকলে গঙ্গা মায়ের মহারতি দর্শন করুন। হরিবল, নিচ দিয়ে চলে আসুন না, আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন কেন? সৎসেবক প্রভু তাড়াতাড়ি আসুন দয়া করে। এ ভাই, তোমরা চলতে পারছো না, বুঝতে পারছো না আকাশের পরিস্থিতি, নড়ে 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 নড়ে। এক বাজাও না, এক নাম্বার নেই। सद्यः पातकसङ्घन्त्री सद्यो दुःखविनाशिनी सुखदा मोक्षदा गङ्गा गङ्गैव परमा गति। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवनतारिणी तरलतरंगे शंकर मौलिनी वासिनी विमले मम मतिरास्तां तव पदकमले। माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे गंगे माँ
भागीरथी सुखदायिनी मातस्तव जलमहिमा निगमे ख्यातः नाहं जाने तव महिमानं त्राहि कृपामयि मामज्ञानम् मा गंगे मा गंगे मा गंगे गंगे मा गंगे हरिपाद पद्म तरंगिनी गंगे हिम विधुमुक्ता धवल तरंगे दूरी कुरु माम दुष्कृति भारं कुरु कृपया भव सागर पारं मा गंगे मा गंगे मा गंगे गंगे मा गंगे तव जलममलं जननि पीतं परमपदं खलु तेन गृहीतं मातर गंगे त्वयि जो भक्तः किल त्वं द्रष्ट्वं न जमसक्तः मा गंगे मा गंगे मा गंगे गंगे मा गंगे पतितयुद्धारिणी जाह्नवी गंगे खंडित गिरिवर मंडित भंगे भीष्म जननी खलु मुनिवर कन्ये पतित निवारिणी त्रिभुवन धन्ये मा गंगे मा गंगे मा गंगे गंगे मा गंगे कल्पलतामिव फलदां लोके प्रणमति जस्तां न पतितलोके पारावार बिहारिणी गंगे विबुध वधूकृत तरलापांगे मा गंगे मा गंगे मा गंगे गंगे मा गंगे तव कृपया चेत् स्रोतः स्नातः पुनरपि जठरे शोभ बोले गंगा मैया की, गंगा मैया की, हर हर गंगे। कलुष विनाशिनी महिमो तुंगे मा गंगे मा गंगे मा गंगे गंगे मा गंगे परिलसदंगे पूर्णतरंगी जय जय जाह्नवी करुणा पांगे इंद्रमुकुटमणिराजित चरणे सुखदे शुभदे सेवक शरणे मा गंगे मा गंगे
माँ गंगे गंगे माँ गंगे रोगं शोकं पापं तापं हर मे भगवती कुमति कलापं त्रिभुवन सारे वसुधाहारे तमसि गतिर्मम खलु संसारे माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे गंगे माँ गंगे अलकानंदे परमानंदे कुरु मयि करुणां कातर बंदे तव तट निकटे जस्सहि वास खलु वैकुंठे तस्य निवासः माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे गंगे माँ गंगे हरे बोल। बरमिहनी रे हरे कृष्णा। Srila Prabhupada ki jai. So now we will start the yajna. Before starting the yajna, I got a message from the chairman of the Temple of Vedic Planetarium, Ambrish Prabhu, Mr. Ford. He had given a message to Ashok Kumar ji, and he is thanking Ashok Kumar ji for this historic effort of creating this Prabhupada Ghat in Sridham Mayapur. And he is thanking all the devotees who are participating in this program. So thank you Ambrish Prabhu and Swaha Mataji for this message, and we will start the yajna right now. Those who are standing outside, please come inside and take your seat. We will start the yajna right now.
Try to get a stand. Hare Krishna. Hare Krishna. हरिः ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ॐ स्वस्ति नो गोविन्दः स्वस्ति नो अच्युतानन्दौ स्वस्ति नो वासुदेवो विष्णुर्दधातु स्वस्ति नो नारायणो नरो वै स्वस्ति नः पद्मनाभः पुरुषोत्तमो दधातु स्वस्ति नो विश्वक्सेनो विश्वेश्वरः स्वस्ति नो हृषीकेशो हरिर्दधातु स्वस्ति नो वैनतेयो हरिः स्वस्ति नो अञ्जनासुतो हनुर्भागवतो दधातु स्वस्ति स्वस्ति
स्वस्ति सुमङ्गलैगेशो महान् श्रीकृष्ण सच्चिदानन्द घन सर्वेश्वरेश्वरो दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परे प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वद्गते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ तद्विष्णोः परमं भरगं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि चक्षुराततं तद्विप्रासो विपण्यवो जाग्रिवागं सस्समिन्धत् विष्णोर्यत्परमं पदम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजम् होतारं रत्नदातामं। हरिः ॐ। ईशेत्वोर्जेत्वा वायवस्तौ वायवस्तो देवो वस्सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणि। हरिः ॐ। अग्न आयाहि गीतये गृणानो हव्यदादये निहोदा सत्सि बर्हिषि। हरिः ॐ। ओग्नायि आयायि वैदायायि तयायि गृणानोह व्यदातोयायि तोयायि नैहोतात्सायि सायिवा अहोवा ईशि। हरिः ॐ। शं नो देवीरविष्टाय आपो भवन्तु पीतये शय्योरविस्रावन्तु नः। हरिः ॐ। शान्ति शान्ति शान्तिः। अब जब भी हम स्वाहा कहेंगे मृग मुद्रा में आपको जो सामने जो आहुति दी गई है उसको अग्नि में आपको अर्पण करना है। ओम भूर्स्वाहायरं विष्णवेरं नमः। ओम भवस्वाहायरं अच्युतायैरं नमः। ओम स्वस्वाहायरं अनन्तायैरं नमः। अथ पुरुष सूक्त होम मूल मंत्र है इदं वास्तुनाथाय इदं नमः। हरिः ॐ। सहस्रशीर्षा वर्षः सहस्राक्ष नमः। ॐ श एवेरग्गं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं उतामृतत्वस्येषानः यरन्नेनातिरोहति। स्वाहा इदं वास्तुनाथाय इदं नमः। ॐ एतावानस्य महिमा यतोज्यायागश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। स्वाहा इदं वास्तुनाथाय इदं नमः। ॐ त्रिपादोर्ध्वोदयित्पुरुषः पादोऽस्येह भवत् पुनः
ततो विश्वं व्यक्रामते शासनानशने अभि स्वाहा ईरं वास्तुनाथाय ईरं नमः तस्माद् विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः स्वाहा ईरं वास्तुनाथाय ईरं नमः ॐ यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीद् आज्यम् ग्रीष्म युग्म शरद्धविः स्वाहा ईरं वास्तुनाथाय ईरं नमः ॐ सप्तास्यासन्वहृदयः त्रिसप्तसमिदकृताः देवाय यज्ञं तन्वानाः अबध्नन् पुरुषं पशुं स्वाहा ईरं वास्तुनाथाय ईरं नमः ॐ तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साद्या ऋषयश्च ये स्वाहा ईरं वास्तुनाथाय ईरं नमः ॐ तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः संभृतं वृषदाज्यं पशोगस्तागंश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये स्वाहा ईरं वास्तुनाथाय ईरं नमः ॐ तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दागंसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मारजायत स्वाहा ईरं वास्तुनाथाय ॐ तस्मादश्व अजायन्त ये खेचोभयादतः गावो हजज्ञिरे तस्माज्जाता अजावयः स्वाहा ईरं वास्तुनाथाय ईरं नमः ॐ यत्पुरुषं व्यरदुः कथिथा व्यगल्वयन् मुखं किमस्य कौ बाहो कावोरोपादावच्येते स्वाहा ईरं वास्तुनाथाय ईरं नमः ॐ ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहोराजन्यकृतः ओरोदरस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागं शूद्रो अजायत स्वाहा ईरं वास्तुनाथाय ईरं नमः ॐ चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत स्वाहा ईरं वास्तुनाथाय ईरं नमः ॐ नाभ्यादासीदन्तरिक्षं द्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशश्रोत्राद् तथा लोकागमगल्वयन् स्वाहा ईरं वास्तुनाथाय ईरं नमः ॐ वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदनीयदास्ते स्वाहा
इदं वास्तुनाथायैरं नमः ॐ धाता पुरस्ताद्यमुदज्जहार शक्रः प्रविद्वान् प्रदिशश्चतस्रः तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते स्वाहा इदं वास्तुनाथायैरं नमः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्ति यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः स्वाहा इदं वास्तुनाथायैरं नमः ॐ भूर्स्वाहायरं विष्णवेरं नमः ॐ भुवस्वाहायरमच्युतायैरं नमः ॐ स्वस्वाहायरं नारायणाय ॐ भूर्भुवस्वस्वाहायरमनन्तायैरं नमः। अतः भूसुक्त होम मूल मंत्र है इदं पृथिव्यै इदं नमः। हरिः ॐ भूमिर्भुम्नाद्योर्वरिणान्तरिक्षं महित्वा उपस्ते ते देव्यरिथेऽग्निमन्नादमन्नाद् ध्यायादधे स्वाहा इदं पृथिव्यैरं नमः ॐ आयं गौः वृष्णिरक्रमीदसनन्मादरं पुनः पितरं च प्रयन्सुवः स्वाहा इदं पृथिव्यैरं नमः ॐ त्रिगं षद्धाम विराजति वाक् पतङ्गायसि श्रियै प्रत्यस्य वहद्युभिः अस्य प्राणारपानाद्यन्तश्चरति रोचना व्याख्यान्महिषस्वः स्वाहा इदं पृथिव्यैरं नमः ॐ यत्वा क्रुद्धः परो वपमन्युना यदवर्त्यां सुकल्पमग्ने तत्तव पुनस्त्वोद्दीपयामसि स्वाहा इदं पृथिव्यैरं नमः ॐ यत्ते मन्युपरोक्तस्य पृथिवीमनुरद्वशे आरित्या विश्वे तद्देवा वसवश्च समा स्वाहा इदं पृथिव्यैरं नमः ॐ मेदिनी देवी वसुन्धरा स्यात् वसुधा देवी वासवी ब्रह्मवर्चसः पितॄणागः श्रोत्रं चक्षुर्मनः स्वाहा इदं पृथिव्यैरं नमः ॐ देवी हिरण्यगर्भिणी देवी प्रसूवरी सदने सत्यायने सीदा स्वाहा इदं पृथिव्यैरं नमः ॐ समुद्रवती सावित्री हनो देवी माह्यङ्गी महीधरणी महोव्यतिष्ठाः शृङ्गे शृङ्गे यज्ञे यज्ञे विभीषिणी स्वाहा इदं पृथिव्यैरं नमः ॐ इन्द्रपत्नी व्यापिनी सुरसरिदिहा वायुमती जलशयनी श्रियं धाराजा सत्यन्धो परिमेदिनी श्वोपरिदत्यङ्गाय स्वाहा इदं पृथिव्यैरं नमः ॐ विष्णुपत्नीं महीं देवीं माधवीं माधवप्रियां लक्ष्मीप्रियसखीं देवीं
नमाम्यच्युतवल्लभां स्वाहा इरं पृथिव्यैरं नमः ॐ धनुर्धरायै विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् ॐ धनुर्धरायै विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् स्वाहा इरं पृथिव्यैरं नमः ॐ भूर्स्वाहा इरं विष्णवे ॐ भुवस्वाहा इरमच्युतायैरं नमः ॐ स्वस्वाहा इरं नारायणायैरं नमः ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा इरमनन्तायैरं नमः हरिः ॐ अग्नायाहि तयाय गृणान तारियाय निहोता सत्सि बरहायिषे बरहायिषा शान्तिः ॐ भूर्स्वाहा इरं विष्णवेरं नमः ॐ भुवस्वाहा इरमच्युतायैरं नमः ॐ स्वस्वाहा इरं नारायणायैरं नमः ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा इरमनन्ताय ॐ वास्तोष्पथे प्रतीजानि ह्यस्मान् स्वावेशो आनमीवौ भवानः यत्त्वे माहे प्रतितन्नो जुषस्वशं नो भवद्विपदेशं चतुष्पदे स्वाहा इदं वास्तोष्पदयैरं नमः ॐ वास्तोष्पदे प्रदरानो न एदिगयस्वानो गोभिरश्वेभिरिन्दौ अजरासस्ते सख्यस्यामभि देवा पुत्रान् प्रतीनो जुषस्व स्वाहा इरं वास्तोष्पदयैरं नमः ॐ वास्तोष्पदे षग्मया संसरादे सक्षीमहिरण्वया गातुमद्या पाहि क्षेमा उत योगे वरं नो यूयं वार स्वस्तिभिः सरानः स्वाहा इरं वास्तोष्पदयैरं नमः ॐ अमीवः वास्तोष्पदे रोपण्या विशन्य सखा सुषेवा एधिनः स्वाहा इरं वास्तोष्पदयैरं नमः ॐ वास्तोष्पदे ध्रुवास्तूनां सत्रं सौम्यानम् द्राप्सो भित्था पुरं शाश्वतीनाम् इन्द्रो मुनीनां सखा स्वाहा इरं वास्तोष्पदयैरं नमः ॐ भूर्स्वाहा इरं विष्णवेरं नमः ॐ भुवस्वाहा इरमच्युतायैरं नमः ॐ स्वस्वाहा इरं नारायणायैरं नमः ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा इरमनन्तायैरं नमः ॐ अग्नये स्विष्टाकृते स्वाहा इरम् अच्युतायैरं नमः
ॐ नमो नारायणाय स्वाहा इरं नारायणाय इरं नमः ॐ नमो नारायणाय स्वाहा इरं नारायणाय इरं नमः ॐ नमो नारायणाय स्वाहा इरं नारायणाय इरं नमः ॐ नमो नारायणाय स्वाहा इरं नारायणाय इरं नमः ॐ नमो नारायणाय स्वाहा इरं नारायणाय इरं नमः ॐ नमो नारायणाय स्वाहा इरं नारायणाय इरं नमः ॐ नमो नारायणाय स्वाहा इरं नारायणाय इरं नमः ॐ नमो नारायणाय स्वाहा इरं नारायणाय इरं नमः ॐ तद्विष्णो परमं भरगं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुराददं तरविप्रासो विपण्यवो जागृवागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं स्वाहा इरं विष्णवेरं नमः ॐ तद्विष्णो परमं भरगं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरादतं तरविप्रासो विपण्यवो जागृवागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं स्वाहा इरं विष्णवेरं नमः ॐ तद्विष्णो परमं भरगं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरादतं तरविप्रासो विपण्यवो जागृवागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं स्वाहा इरं विष्णवेरं नमः ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा इरं नरसिंहाय इरं नमः ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा इरं नरसिंहाय इरं नमः ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा इरं नरसिंहाय इरं नमः ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा इरं नरसिंहाय इरं नमः ओम महाभागदाय वासुपुरुषाय स्वाहा इरं वास्तुपुरुषाय 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 इरं नमः ओम महाभागवताय वास्तुपुरुषाय 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 स्वाहा ओम भूर्स्वाहा इरं विष्णवे इरं नमः ओम भुवः स्वाहा इरमच्युताय इरं नमः ओम स्वस्वाहा इरं नारायणाय इरं नमः ओम भूर्भुवः स्वस्वाहा इरमनन्ताय इरं नमः हरिः ओम अग्नायाहि तयाय गृणानो हव्यरातार्याय निहोता सत्सि बरहायिषे बरहायिषा औहो बर्हि श्री शांति 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 ओम भूर्
भूर्स्वाहायरं विष्णवेरं नमः ॐ भुवस्वाहायरमच्युतायैरं नमः ॐ स्वस्वाहायरं नारायणायैरं नमः ॐ भूर्भुवस्वस्वाहायरमनन्तायैरं नमः ॐ प्रजापते विष्णोर्नत्वरेतानन्यो जातानि परिता बभूव यत्कामस्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयग्गं स्यामपदायोरयीनां स्वाहा इरं विष्णवेरं नमः ॐ भूर्स्वाहायरं विष्णवेरं नमः ॐ भुवस्वाहा ॐ स्वस्वाहायरं नारायणायैरं नमः ॐ भूर्भुवस्वस्वाहायरमनन्तायैरं नमः ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः स्वाहा इरं गुरवेरं नमः ॐ श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं स्वाहा इरं रासाचार्यायैरं नमः वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च स्वाहा इदं गुरुगौराङ्ग राधाकृष्ण सर्ववैष्णवरत्वेभ्य इदं नमः ॐ हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते स्वाहा इरं कृष्णायैरं नमः ॐ तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये स्वाहा इरं राधिकायैरं नमः ॐ वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः स्वाहा इरं सर्ववैष्णवेभ्य इरं नमः ॐ जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द स्वाहा इरं पञ्चतत्त्वायैरं नमः ॐ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे स्वाहा इरं राधाकृष्णाभ्यामिरं नमः ॐ भूर्स्वाहायरं विष्णवेरं नमः ॐ भुवस्वाहायरमच्युतायैरं नमः ॐ स्वस्वाहायरं नारायणायैरं नमः ॐ भूर्भुवस्वस्वाहायरमनन्तायैरं नमः। पूर्णाहुति के लिए सभी खड़े हो जाएं। सभी लोग एक एक मुट्ठी अपने हाथ में ले लीजिए। ओम नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः स्वाहा। ओम भर्गवस्व कस्वा सत्यो वरानां मग्गं निष्ठो मत्सरन्दासः दृढाचे दारुचे वसु ओम भर्गवस्व अवीक्षणस्सगीरामाविदाचारित्रीणां शरम्भावास्युदये ओम शान्ति 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 ओम
राहु शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति राप शांति वायु शांति तेज शांति औषधय शांति लोका शांति ब्राह्मण शांति वैष्णव शांति शांतिरस्तु रस्तु ओम शांति 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 ओम स्वस्ति नो गोविंदः स्वस्ति नो अच्युतानन्दः स्वस्ति नो वासुदेवो विष्णुर्दधातु स्वस्ति नो नारायणो नरोरै स्वस्ति न पद्मनाभः पुरुषोत्तमो दधातु स्वस्ति नो विश्वक्सेनो विश्वेश्वरः स्वस्ति नो ऋषिर्यशो हरिर्दधातु स्वस्ति नो वैनतेयो हरिः स्वस्ति नो अञ्जनासुतो हनुर्भागवतो दधातु स्वस्ति सुमंगलैगेशो महान् श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन सर्वेश्वरेश्वरो दधातु ओम शांति 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 ओम अंगहीनं गृहहीनं विधिहीनं च यद्भवेत् अस्तु तत्सर्वमच्छिद्रं कृष्णकाष्णः प्रसारतः यत्किञ्चित् वैगुण्यं जातं तद्दोषप्रशमानय श्रीकृष्णस्मरणं करोमि ओम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे रामेश्वर प्रभु और रामेश्वर प्रभु परिक्रमा करिए कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. सुनना चाहोगी कहाँ पहले बताओ कहाँ से बॉम्बे बॉम्बे ना यहाँ जूस我们那个已经成为妈卡了。哦，他们现在你看现在加上去，对，现在是牛奶。
ओम आपयस्वा समुदे विश्वदा सोम कृष्ण्या भवा वाजस्यां संगते ओम दधिक्रामणो अकारीशं जिष्णोरस्वस्य वाजिनः सुरभीरो मुखत्रणकर आयुगंशितारिषद ओम घृतवति ओम तेजोसि शुक्रमस्यामृतामसि धाम नामासि प्रियं देवानामनादृष्टं देवयजानमसि ओम गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीगं सर्वभूतानां ताम्योपक्वये श्रियाम् ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम देवस्य त्वा सवितो प्रसवे विष्णोर्बाहुभ्यां वृषो हस्ताभ्यां सरस्वत्यै वाचो यन्तोर्यन्त्रे यददामि बृहस्पतिष्ठा सम्राज्ञा विषिञ्च्यां यसौ. Okay, Prabhuji, Usha, you can pour. Prabhu, clean all the bricks. Nice. Give them enough water. Harihi Om Yam Om Madhavo Madhavo Vachi Madhavo Madhavo Hridi Smaranti Sadhavas Sarve Sarvakaryeshu Madhavam Labhastesham Jayastesham Kudastesham Parabhava Yesham Indivarashyamo Hridayasto Janardana Mangalam Bhagavana Vishnu Mangalam Madhusudana Mangaloyam Rishikesho Mangalayatano Harihi Vishnocharanamatrena Krishnasya Smaranat Harihi Sarvavignani Nashyanti Mangalasyanna Samshayah Om Taravishno Paramam Padagam Sada Vashyanti Surayah Divi Vachakshurpadatam Taravipraso Vipanyavajagrivagam Sasamindade Vishnoryat Paramam Om Krishno Vai Satchidananda Ghanaha Krishna Adi Purushaha Krishna Purushottamah Krishna Ukaramadi Moolam Krishna Sahasravai Karyah Krishnam Kasham Kridadisham Prabhu Pujyah Krishno Nadis Tasmin Jandantara Bahye Yanamangalam Dallavade Kriti Om Krishna Nanda Mukunda Madhav. Prabhuji, the first break? Yes? Okay. Very good. হরে কৃষ্ণ সকলের নিকট একটি বিনীত প্রার্থনা প্রসাদের ব্যবস্থা রয়েছে পেয়ে যাবেন to everyone please take prasadam and then leave. Hare Krishna, our prasadam counter on your right side, please go and take prasadam. আপনাদের জন্য প্রসাদের ব্যবস্থা রয়েছে মঞ্চের ডান দিকে প্রসাদের স্টল রয়েছে সেখান থেকে প্রসাদ সংগ্রহ করুন. হরে কৃষ্ণ. Not supposed to give. Lay out that place in the front. Yeah. Roll your last chair here. Thank you. Granta. 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 Granta.
এই কাকু এসছে But then we're gonna go there for putting bricks to the pit. The Where? Mahanubhavas, the There. Mahabahos. I'm going to carry it on my consciousness. মাত্র 8টা ইট, আমি ছোটবেলায় 10-10টা ইট নিয়ে যেতাম। Wait, slowly. Yeah. प्रभुजी आप लोगों को ऑडियो उठाना है Can you come slowly? बहुत hold कर यार. This is for Can you come slowly? contractor labors. बनाना आप दोनों को ही, हम दोनों को ही। Can you come slow? Can you come slow, Prabhuji? इस वाले गेट से नहीं। Oh, can you come slow? Yeah, slow. तुम ही आगे जाओ ना। हैवी आते स्लो जाओ ना। जय श्री प्रभुपाद की जय, प्रभुपाद घाट की जय, भूमि पूजा महामहोत्सव की जय, मायापुर धाम की जय, गंगा माता की जय, गंगा माता की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। अब मेरा हाथ को पकड़ के रखियो। सपोर्ट दे रहा हूँ मैं। हेवी है। It is quite heavy. 35 किलो। यहाँ पे स्लिपरी। बोलो गंगा मैया की। Can you come here slow? स्लो है? मैं सपोर्ट देता हूँ। बेटा। Slowly. Oh my. Yeah. আপনি কিন্তু 100% নিউজে আসবেন। ठीक है हो जाएगा। তো ধানের ক্ষেত बहुत स्लिपरी। হ্যাঁ এখানে স্লিপ देखिए नाम ना देखा
देवस्वामी पुरस्वामी गृहस्वामी परिगृहे पशु वृद्धिकरी भव यथा चलो गिरी मे वंश यथा चलः तथा त्वामचलो भूत्वा तिष्ठा च from this auspicious place. Brahmanashpate Devayandastave Hare Krishna, just thank you very much for watching. Sorry about this. Okay, Hare Krishna, thank you very much for watching. I'm afraid we can't show you the Bhumi Puja because it's too far away for our cables, but we will make a video of it for you to watch tomorrow or the day after Chaturdasi. So thank you very much for attending this. It's been a wonderful program here down by the River Ganges, and our thanks go out obviously to the Government of India for stepping in and helping like this. And we hope to see you all online for Mangalarti tomorrow, Mayapur Mangalarti. And if not, definitely everybody please tune in to Nrsimha Chaturdasi, 4:30 p.m. on the 15th for Lord Nrsimha's annual Abhishek. And we also have a drama and the premiere of a very beautiful new film, and then the Darshanarati of Lord Nrsimhadev afterwards. That's from 4:30 to 9 o'clock on the 15th of May, Sunday. So please join us then. Okay, thank you. Hare Krishna. Done. Okay.